सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है। इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वो दिखाई पड़ता है, जो निकट है वो आंख से ओझल हो जाता है। दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन। और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव। इसे थोड़ा हम ठीक से समझ लें, क्योंकि अंतर यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानना इसे। पूछते हैं लोग, कहाँ खोजें परमात्मा को? पूछते हैं कि जो भीतर ही छिपा है वो भूल कैसे गया है? पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, श्वासें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वो भी बिछड़ कैसे गया है? जो मैं स्वयं ही हूं उससे भी विस्मृति कैसे हो गई? और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। प्रतीत होता है वे जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जो मेरे भीतर ही छुपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूँ, जो मैं ही हूँ वो भी अपरिचित रह जाता है। तो फिर परिचय किससे होगा? पहचान किससे होगी? ज्ञान किसका होगा? जब पास ही छूट जाता है हाथ से तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे? और ऐसा नहीं कि वो आज पास हो गया हो, वो सदा से ही पास है। अनंत अनंत काल से पास है। उससे क्षण भर को भी हमारा छूटना और दूर होना नहीं हुआ है। हम जहां भागे वो हमारे साथ भागता है, हम जहां जाएं वो हमारे साथ जाता है। नरकों में भी वो हमारे साथ यात्रा करता है, और स्वर्गों में भी, पाप में भी वो हमारे साथ उतना ही खड़ा होता है जितना पुण्य में। ये कहना भी ठीक नहीं कि साथ खड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे साथ होता है उससे भी थोड़ी दूरी होती है। हमारा होना और उसका होना एक ही बात है। अगर ये सच है तो इस जगत में बड़ा चमत्कार हो गया कि हम अपने को ही खो बैठे। जो असंभव मालूम पड़ता है, अपने को कैसे खोया जा सकता है? अपनी छाया तक को खोना मुश्किल है, हम अपनी आत्मा को खो बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? पर ये हुआ है। उसके होने की घटना कैसे घटती है वही इस सूत्र का सार है। इस सूत्र में प्रवेश करने के पहले इसके बुनियादी आधार समझ लें। आंख की सीमा है, एक परिधि है। उससे ज्यादा दूर हो तो आंख नहीं देख पाती, उससे ज्यादा पास हो तो भी आंख नहीं देख पाती। आंख के देखने का एक विस्तार है। किसी चीज को आंख के बहुत पास ले आए फिर आंख नहीं देख पाएगी, बहुत दूर ले जाए तो भी आंख नहीं देख पाएगी। तो एक क्षेत्र है जहां आंख देखती है, और इस क्षेत्र के उस पार या इस पार आंख अंधी हो जाती। और आप तो इतने निकट हैं कि आंख के पास ही नहीं है, आंख के पीछे है। यही अड़चन है। ऐसा समझिए कि दर्पण के सामने खड़े हैं तो एक खास दूरी से दर्पण पर ठीक प्रतिबिंब बनता है। अगर बहुत दूर चले जाएं तो फिर दर्पण पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बहुत पास आ जाए कि आंख को दर्पण से ही लगा ले तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा।
लेकिन यहाँ मामला ऐसा है कि आप दर्पण के पीछे खड़े, इसलिए दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का कोई उपाय ही नहीं। आंख आगे है, आंख पीछे है। आंख देखती है उसको जो आंख के आगे हो, आंख उसको कैसे देखे जो आंख के पीछे। कान सुनते हैं उसको जो कान के बाहर है, कान उसको कैसे सुने जो कान के भीतर है। आंख बाहर खुलती है, कान भी बाहर खुलते हैं। मैं आपको छू सकता हूं, अपने को कैसे छू? और अगर अपने शरीर को भी छू लेता हूं इसीलिए, तो वो इसीलिए कि शरीर भी मैं नहीं हूं, वो भी पराया है, इसलिए छू लेता हूं। लेकिन जो मैं हूं, जो छू रहा है, उसे कैसे छू? उसे किससे छू? इसलिए हाथ सब छू लेते हैं और खुद को नहीं छू पाते। आंख सब देख लेते हैं और खुद को नहीं देख पाते। अपने लिए हम बिल्कुल अंधे। हमारी कोई इंद्रिय काम की नहीं है। जिन इंद्रियों से हम परिचित हैं वो कोई भी काम की नहीं है। अगर कोई और इंद्रिय का उद्घाटन न हो जो भीतर देखती हो, अगर कोई और आंख न खुल जाए जो भीतर देखती हो, जो पीछे देखती हो, जो उल्टा देखती हो, कोई कान न खुल जाए जिस पर भीतर की ध्वनि तरंगें भी प्रभाव लाती हो, तब तक हम स्वयं को देख और जान और सुन न पाएंगे। तब तक स्वयं को छूने का कोई उपाय नहीं। जो निकट है वो चूक जाता है, जो निकट से भी निकट है वो असंभव। इसीलिए मछली सागर को नहीं जान पाती। दूसरी बात, सागर में ही पैदा होती है, सागर में ही जीती है, सागर ही उसका भोजन, सागर ही उसका पेय, सागर ही उसका प्राण, सागर ही सब कुछ। फिर सागर में ही मरती और लीन हो जाती। जानने के लिए मौका नहीं मिलता क्योंकि दूरी नहीं मिलती, फासला नहीं मिलता। मछली को सागर का पता चलता है अगर कोई उठा के उसे सागर के किनारे फेंक दे, तभी। ये बड़ी उल्टी बात हुई। सागर का पता तब चलता है जब सागर से दूर हो जाए। तो मछली तरसती है रेत पर, धूप में, तब उसे सागर का पता चलता है, क्योंकि इतनी दूरी तो चाहिए पता चलने के लिए। पैदा होने के भी पहले जो मौजूद था और मरने के बाद भी जो मौजूद रहेगा, और जिसमें ही पैदा हुए और जिसमें ही लीन हो गए, उसका पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए थोड़ी बिछड़न, थोड़ा बिछोड़ होना चाहिए। इसलिए मछली को सागर का पता नहीं चलता। किनारे पे कोई फेंक दे तो पता चलता। आदमी की और भी मुसीबत है। परमात्मा सागर ही सागर है, उसका कोई किनारा नहीं जिस पे आपको फेंका जा सके। जहां आप तड़पने लगे मछली की तरह, ऐसा कोई किनारा होता तो बड़ी आसानी हो जाती। ऐसा कोई किनारा नहीं, परमात्मा सागर ही सागर है। इसीलिए तो जो परमात्मा में किनारा खोजते हैं वो उसे कभी नहीं खोज पाते। जो परमात्मा की मझधार में डूबने को राजी हैं, उनको ही उसका किनारा मिलता है। किनारा है ही नहीं, खोजने का कोई उपाय नहीं। और किनारा हो भी कैसे? सब चीजों का किनारा हो सकता है, समस्त का किनारा नहीं हो सकता, क्योंकि किनारा बनता है किसी और चीज से। नदी का किनारा बनता है, सागर का किनारा बनता है किसी और चीज से। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है जिससे किनारा बन सके। परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। परमात्मा का मतलब कोई आकाश में बैठे हुए किसी व्यक्ति का नहीं है जो जगत को चला रहा हो। ये तो बच्चों की कहानियां है। परमात्मा से अर्थ है उस तत्व का जिसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ये उसकी वैज्ञानिक परिभाषा हुई।
परमात्मा का अर्थ है समस्त, सर्व, सब कुछ, जो भी है। जो भी है उसका कोई किनारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ किनारा बनने को बचता नहीं है। इसलिए परमात्मा मझधार है, वहां कोई किनारा नहीं। जो डूबने को राजी है वो उबर जाता है, जो उबरने की कोशिश करता है बुरी तरह डूबता है। कोई किनारा हो तो पता भी चल जाए, इसीलिए हमें पता नहीं चला है। उसी में हम हैं, जिसे हम खोजते हैं उसी में हम हैं, जिसे हम पुकारते हैं उसे पुकारने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी दूरी नहीं है कि हमारी आवाज हमें जोर से पुकारनी पड़े। इसलिए कबीर ने कहा है कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से अजान पढ़ते हो? क्या तुम्हारा ईश्वर बहरा हो गया जो तुम इतने जोर से पुकारते हो? इतने पास है कि आवाज देने की भी तो जरूरत नहीं। अगर मौन भी कुछ भीतर होगा तो वो भी सुन लिया जाएगा, इतने पास है। दूसरे को पुकारना हो तो आवाज देनी पड़ती है, खुद को पुकारने के लिए आवाज देने की भी क्या जरूरत है? दूसरे का तो तभी सुनाई पड़ता है जब शब्द ध्वनित हो, स्वयं का तो मौन भी सुनाई पड़ता है। इतने जो निकट है वही कठिनाई है। इसे ठीक से ख्याल में ले लें कि सत्य से हम इसलिए चूक गए हैं क्योंकि हम उसी में पैदा होते, उसी से बनती हमारी मांस मज्जा, उसी से निर्मित होती हमारी हड्डियां, वही है हमारा श्वास, वही है हमारा प्राण, वही सब कुछ है। अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक द्वारों से हम उसी का जोड़ है, उसी का खेल। फासला बिल्कुल नहीं है, इसलिए स्मरण नहीं आता, इसलिए स्मरण असंभव हो गया है। इसलिए संसार तो बहुत दिखाई पड़ता है, सत्य बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। संसार दूर है, जगह है दोनों के बीच में। इसलिए संसार की वासना जगती है। वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती। परमात्मा के नाम से कुछ और नहीं होता। नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। एक मित्र मुझे आके कहते थे कि जब से आपके शिविर में, साधना में लीन होने लगे बड़ा लाभ हो रहा है। पूछा क्या लाभ हो रहा है? तो उन्होंने कहा अभी आध्यात्मिक तो नहीं हो रहा लेकिन आर्थिक शुरू हो गया। ठीक, आध्यात्मिक की इतनी जल्दी भी क्या है? टाला जा सकता, स्थगित किया जा सकता। आर्थिक तत्काल है। हम खोजते कुछ और है, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा, अगर जरा हम लेबल उखाड़े तो भीतर कुछ और पाया जाए। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वो आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है। यू नेवर गो बैक टू इट,
ultimately you forget that you have a center. More civilized, more cultured, educated the world becomes, more centerless. Everyone is just a circumference. The master is missing. The house is there. The center is not there. And even if you try to reach the center, you cannot reach it because you don't know how to reach it. And the ways and the means you try to reach it really are not means and ways. They are the barriers. Because you try to reach the center in the same way as you try to reach the circumference. You know only one way. How to move to the circumference. How to desire. You desire for riches. You desire for power. You desire for sex. You desire for so many things. The mechanism of desire is you desire for something which you have not. You desire for something which can become possible only in the future, never in the present. Desire is meaningful only in reference to the future. You cannot desire immediately here and now. You will need time. Desire needs time to move. So you desire for the tomorrow. You say tomorrow or in the next life. This will happen. This I would like to happen. I hope for this. Desire is basically future oriented. And desire means something which you don't have. This mechanism, if you apply to the inner journey, will become a barrier. This mechanism cannot help. Because the basic situation differs. Not only differs, it is absolutely diametrically opposite. Your being, your center is not something to be achieved in the future. It is here and now. It is already the case. You can have it immediately. No time is needed to move to it. Really, no movement is needed. Just an awareness, and you are there. You have not moved away. You are just unaware. You have not gone anywhere so that you have to come back. You have never gone in reality, only in dream. You are sleeping in Mount Abu and dreaming of London, and someone suddenly awakes you. Will you be awake in London or in Mount Abu? Or will you tell that, wait, I am in London and now I will need to come back to Mount Abu? No, from a dream. If you are awakened, you are suddenly here. The dream world, the dream journey disappears completely. You are not to come back because you have never gone away. Your being, your center is here and now. It cannot be made an object of desire. You cannot desire it. And if you desire it, you will miss it. Your very desire will become the barrier. Lao Tzu says, do not seek, otherwise you will miss. Do not seek and find.
said, do not seek and find looks illogical. It is not. It looks illogical because we know only one logic, the logic of desire. If someone says, do not find riches, do not seek riches, and you will find, it is illogical. You will never find it. If someone says, don't long for worldly things, and you will find them, nonsense. You will never find them. You will have to seek. Then too it is difficult to find them. But it is not illogical for the inner journey. Note it, understand it deeply. The inner journey is just the reverse. From center to periphery, this is the way. Create an object of desire and then move towards it. Just the reverse is the way which goes in. Don't create any object of desire. And don't move, and you will reach it, because you are already there. Any movement, anywhere, and you will miss your center. No movement, and you are there, suddenly awakened. But because we know only one logic, one method, to reach a certain thing, we go on applying it towards the inner journey. That creates hindrances. They are self-created. Nothing is to be done to reach the center. I repeat, nothing is to be done to reach the center. It is there. If you can be in a non-doing movement, you will find it. Or we can say it, non-doing is the doing for the inner center. Non-desiring is the way for the inner center. Just being, not becoming, is the gaining of it. But the mind will ask what to do. Even if I say, don't do anything, the mind will constantly go on asking, but how? How not to do anything? What to do to achieve this non-doing, this non-action? How it is to be achieved, and how means something is to be done. So one secret I will tell you. All the techniques of meditation, the one which we will be doing just after the talk, all the techniques are really just toys to play with. Because the mind goes on asking what to do, so the technique supplies you. Do this. By that doing, you are not going to reach the center. But by that doing, suddenly you will be absorbed. Suddenly, totally moving in that doing, the doing will stop. As I said last night, you cannot be angry totally. If you try to be totally in anger, anger will disappear and compassion will arise. You cannot be hating totally. If you hate totally, at the climax, hate will disappear and love will arise. You can be in love totally. The same. If you do
In no doing you can be totally. Your being remains out of it. You go on doing a certain thing, your being remains out of it. It can never be total. You walk. Can you walk totally? You cannot. Because a certain inner point remains non-walking. It will never walk. You go on to the moon. It will never go anywhere. It will remain there, inside. Just sitting there. That's why if you love, and your love is an act, an action, then your love too cannot be total. If you are doing love, if you are making love, love too cannot be total, because no action can be total. The being remains out. The love can be total only if you become love. It is not a doing. You are love. You are not making love. Your very being is love. That's why hate cannot be total, because your being can never become hate. You can hate someone, but your being can never become hate. Your being can become love. No doing, no action can be total. Only being can be total. So I will suggest you a method to do. And the trick, I may be allowed to call it a trick. And the trick is this, that if you go totally in it, suddenly a moment will come, all doing will cease, all effort will cease, and you will be thrown back to your center. And there will be no doing, no effort. Simple existence, innocent existence, just being. Tanka, one Zen master, was standing on a hill, just standing. 3 persons were walking, just taking a morning walk. So they started talking about Tanka, what he is doing there. The first one said, sometimes he goes there to find out his cow. The cow, it seems, didn't return in the night back. So he has gone there and he's just looking from a high point where the cow is. But the second one says, this seems not right. Because Tanka is just standing without moving. If he was searching something, he must move. His face seems fixed. And even from this faraway point, we can infer his eyes are closed. The second one said, I propose another hypothesis. He is not looking for his cow. Rather, he is waiting for some friends who might have accompanied him, but are left somewhere behind. He must be waiting. But the third one said, he cannot be waiting, because if someone waits, sometimes he looks back. He never looks back. He is just standing like a statue. So I propose a third idea. He is meditating. It was difficult to decide, and they argued. So ultimately they decided we must go to him and ask what he is doing. So they went. They asked Tanka, what are you doing? The first one said, are you in search of your cow?
The cow has not returned home. Tanka is reported to have said, I have no home in this world and nothing to miss. Who has said to you that I have a cow? The cow is there, of course, but I don't have it. So there is no question of finding it, searching for it. So the second one was delighted and he said, then my hypothesis is going to be right. You are waiting for some friends who are left behind? Tanka laughed and said, I have no enemies, so I cannot have friends. And I am alone, so I cannot leave someone behind. I came alone in this world. I am alone in this world, and I will leave this world alone. So I am neither disturbed by enemies nor by friends. Then the third one was, of course, delighted. And he said, now nothing is left, and my hypothesis is right. You are meditating, are you not? Tanka said, I am not meditating. Because really I am not doing anything. I am just standing. I am. I am existing, not doing anything. But this is meditation. Meditation is not doing something. But you cannot take a jump immediately into non-doing. So I suggest, make your doing total. Move into it so deeply and so totally that suddenly the doing drops. And you are alone left, just existing. Just like a tree, of course aware, but just like a tree, just like a flower, aware, but just like a flower existing, just like a stream flowing, aware, but just like a stream. No mind, just you alone, no thoughts. When there are no thoughts, you cannot move from the center. You move through thoughts. Thoughts are the ways towards the periphery, and no thought is dropping back to the center. Now, I will tell you something about the technique we are going to use. 4 steps. First step, 10 minutes fast, chaotic breathing with no system. This is not a yoga exercise. Chaotic, anarchic. Why? Because if you use any systematic breathing, any rhythm, the mind can control it. Mind can control any system. Mind is the great systematizer. So we are here to break the systems, the system of the mind. So breathe chaotically like a madman. Fast. Take the breath in as much as you can and throw it out. Take it in and throw it out. Fast with no rhythm. So that mind is just socked. And breathing is a great device to sock the mind. You must remember that with every emotion, breathing changes. And every emotion has its own system of breathing. When you are in love, breathing is relaxed. When you are angry, breathing can never be relaxed.
When you hate someone, breathing is different. When you are in compassion, breathing is different. When you are at ease, breathing is so silent that you cannot even feel it. When you are tense, breathing cannot be silent. You can feel it. This chaotic breathing belongs to no emotion. So simply by doing it, you transcend emotions as a mechanism of the mind, and the mind is just thrown off. It cannot continue. 10 minutes mad, fast breathing. Second step is a deep catharsis. You have to throw yourself out. The mind has to be thrown out. Laugh, but madly. Totally. Cry, weep, whatsoever comes to your mind. But madly. Jump, dance, do whatsoever comes to your. And if nothing is coming, then too, try something. Because mind is a long suppression. So sometimes you feel nothing is coming. Start. Choose anything. Laugh, cry, scream, jump, dance. But do something. Don't just stand there. Do something. And whatsoever you are doing it, do it exaggeratedly. The second step, you must throw your whole civilization, the whole culture. Just be like children, with no fear, the fear of the others. Your eyes are to be closed. You have to use a blindfold. In the third, when all the nonsense that is suppressed is thrown out, when all the madness is thrown out, you have to use a mantra. The mantra is the sound of who. Who. Meaningless. It is just a sound with no meaning attached to it. Just who. It is not W-H-O. It is H-O-O. Who. Loudly you have to make it and dance with it and move it in totally so that you are adjusted completely. And in the fourth step, you are not to do anything. You are just to fall down and be as if dead.